टूरिज्म मलेशिया ने सटे 2026 में अपनी भागीदारी से पूर्व आज नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय आउटबाउंड पर्यटन बाजार के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टूरिज्म मलेशिया के चेयरमैन बाय BHG दातुक मनोहरन पेरियासामी तथा भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख ट्रैवल ट्रेड पार्टनर्स, एयरलाइंस प्रतिनिधि, पर्यटन क्षेत्र के हितधारक और मीडिया उपस्थित रहे। मजबूत प्रदर्शन और बाजार की सकारात्मक गति को देखते हुए मलेशिया ने वर्ष 2025 में 4.22 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2026 की तुलना में 14.6% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत मलेशिया के सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ते स्रोत बाजारों में से एक बना हुआ है। वर्ष 2025 में भारत से 16 लाख से अधिक पर्यटक मलेशिया पहुंचे, जो इस गंतव्य के प्रति बढ़ते विश्वास और मांग को दर्शाता है। 2026 campaign, how important is India as the source market? So as we mentioned during the press conference, India is one of our priority markets because currently India ranked 5th in terms of the arrivals in Malaysia that we registered. The first 3 they are from ASEAN country, 4th China, 5th is India. So this is how it shows very clearly that India is a very important market for Malaysian tourists. And also, as what I mentioned, Indian tourists is also in terms of the spending, they are also high spenders, among the high spenders tourists that come to Malaysia. So we like to encourage more. Of course, I think because we offer a destination that is very affordable, but you can experience is a luxurious experience in Malaysia with a very affordable price. So this is also the reason I believe why Indian tourism is spending in Malaysia, because it's worth spending. Sir, how much growth you have seen in Indian tourist arrivals compared to last year? The previous year it was like 800,000. 2024, but in 2025 it went up to 1.5 million. So in 2026 we are targeting 2 million arrivals from India. So it shows the increase, very significant increase. We are hoping that for this year again we going to be able to attract more Indian tourists to come, because there are a lot of activities and programs that have been planned for this year, because in conjunction with Visit Malaysia year 2026. Facilitation for Indian travelers. Okay, currently the status is quo. So that means we have free visa until towards 31st December 2026. But I think based on these the numbers of these Indian traveling to Malaysia, I think Malaysia will maybe announce on the positive side, maybe prolong or whatever. But we still have to wait until I think by October only they will announce. Sir, yeah. You speak English? Translate. No, not on the visa. Currently, it's still until 31st December. So maybe based on the what we call it, the numbers increase. Sir, IDC देख रहे हैं? Indonesia, we believe that our government will respond on the positive side on the visa policies. हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? हाँ बोलिए। दिसंबर 2023 में हमें वीज़ा फ्री सर्विस शुरू किया था और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। 2024 में 71% इंक्रीज हुआ अराइवल्स में, और इस साल भी हमारा लास्ट ईयर टारगेट 1.5 मिलियन का था, जो कि ऑलमोस्ट हमने 1.6 अचीव करा, और इस साल भी हमारा जो टारगेट है वो 2 मिलियन का है, और जो वीज़ा है वो 31 दिसंबर 2026 तक इंडियंस के लिए फ्री रहेगा। ठीक है।